foreign successor of the Maurya, the Indo-Greek, that is the 2nd century BC, that is the Indo-Yavana, that is the Indo-Greek, that the Bactrian Greeks were the first foreign rulers of the northwest India in the post-Maurya period. That is the Indo-Greek or the foreign successor of the Maurya, that is the Indo-Greeks, the Sakas, the Parthian and the Kusanas. The Indo-Greek, that is the 2nd century BC, Indo-Yavana, that is the Indo-Greek, that is the Bactrian Greeks were the first foreign rulers of the northwestern India in the post-Maurya period. The Indo-Greek Bactrian were the first foreign ruler of the northwestern India in the post-Maurya period. The most famous Indo-Greek ruler the most famous Indo-Greek ruler was the Menander, that is the 165 to 145 BC, who was also known as Menander. He was converted to Buddhism by Nagasen or the Nagarjuna. The Indo-Greek ruler is important in the history of the India because of the large number of the coins which they issued. The Indo-Greek were the first ruler in India to issue coins which can definitely be attributed to the Indo-Greeks were the first ruler in India to issue coins which can definitely be attributed to the kings. Hello everyone. And 3 countries stating with letter R. 3 countries: Rwanda, Rome, R से रियो डी जेनेरियो तो कंट्री नहीं है, और क्या हो सकता है R से, और तो पता नहीं, I don't know. The Sakas, the Indo-Greeks, that is the 2nd century BC, the Indo-Greek Bactrian Greek were the first foreign ruler of the northwestern India in the post-Mauryan period. The most famous Indo-Greek ruler was the Menander, 165 BC to 145 BC, who is also known as the Menander. He was converted to Buddhism by the Nagarjuna or the Nagasen. The Indo-Greek ruler is important in the history of India because of the large number of the coins which they issued. The Indo-Greek were the first ruler in India to issue coins which can definitely be attributed to the kings. The Indo-Greek were the first ruler in India to issue coins which can definitely be attributed to the kings. Hello Zara. Yes, a long time. Hello Rajnish. Hello. The Indo-Greek ruler is important in the history of India because of the large number of the coins which they issued. The Indo-Greek were the first ruler in India to issue coins which can definitely be attributed to the kings. Which can definitely be attributed to the kings. They were the first to issue gold coin. They introduced Hellenic, that is the Greek features in art, giving rise to the Gandhar school in the northwestern India. The Sakas, the 1st century BC, 4th century BC. The Sakas, also known as Scythians,
replaced the Indo-Greeks in India. Among the 5 branches of Sakas with their seat of the power in different parts of India, the most important was the one who ruled in Western India till the 14th century AD. The most famous Saka ruler in India was the Rudraman, that is the 130 AD, 150 AD. He is famous not only for his support. Where are you from? I am from Bihar. Hello there. Say something. I'm studying. He is famous not only for his military conquest, particularly against the Satavahanas, but also for his public work that he repaired the famous Sudarshan Lake of the Maurya period to irrigate the dry region of the Saurashtra, and his patronage of Sanskrit. He issued the first ever long inscription in Jai Sanskrit. Other important Saka ruler in India were Nahapana, Usavadeva, Gamatika, and the Chastana, etc. Okay? In about 58 BC, a king of generally the Vikramaditya is supposed to have fought effectively against the Saka, and era known as Vikram Sambat, जो कि रिकॉग्न हुआ था 58 BC में. The Parthian 1st century BC से लेके 1st century AD. Originally, the Parthians, Pallavas lived in Iran. They replaced the Sakas in the northwestern India but controlled an area much smaller than the Sakas. The most important Parthian king was Gonda Ferenc. The most famous Parthian king was Gonda Ferenc, during whose reign Saint Thomas, that is said to have came to India for the propagation of the Christianity. The Kusana, the 1st century AD, that is the 1st century AD, that is the 1st century AD is like a 3rd century AD. The Kusana were one of the 5 PHE clan of the Central Asia. They replaced the Parthians in northwestern India and the middle Gangetic basin. The 5 Kusan dynasty was founded by the Cadaphyses I. Was the Kujul Cadaphyses, and the second was the Cadaphyses II, जिसको Bhima Cadaphyses who issued the gold coins. Where are you from? Say some. Oh, I am from. Please tell me about your subject when you were. I have opted for the PCB, that is the bio, physics, chemistry, and bio. According to the Rabatak inscription, Rabatak village, Baglan province, Afghanistan, Kanishka was the son of the Bhima Cadaphyses. Kanishka extended the Kusan power over Upper India. His capital was at Peshawar, that is the Pusapur, and the Mathura. Most famous Kusan ruler was Kanishka, that is 78 AD से लेके 108 AD. Also known as the second Asoka, he started an era in 78 AD which is now known as the Saka era and is used by the government of India. Kanishka was a great patron of the Mahayana Buddhism. In his reign, the 4th Buddhist council was held in Kundarban, Kashmir, where the doctrine of the Mahayana form of the Buddhism were finalized. The last great Kusan ruler was Vasudeva I. The last great ruler Kusana was Vasudeva I. The Kusan controlled the famous Silk route, that is starting from the China, passing through their empire onto Iran and the Western Asia. This route was a source of the great income to the Kusanas. The Kusana were the first ruler in India to issue gold coins on a wide scale. In the royal court of the Kanishka, most of the scholars found patronage, that is Paras, Amar, Asvagos, Nagarjuna, Charak, Makar, Vasumitra. I choose PCM. You choose the best stream, by the way. In the royal court of the Kanishka, most of the scholars found patronage, that is the Paras, Vasumitra, Asvagos, Nagarjuna, Charak, and Mathura. That is the where some of them. That is the Amravati. That is the Amravati school, फिर गांधा school और शुरुआत की एक और कौन सा school था? Mathura school. Gandha school and the Mathura school for the Indo-Greeks and the
Kusana sagas and the for the Sakas and the Kusanas, and for the Sakas and the Kusana, or for the Sakas and the Sakas and the Kusana, or the my gosh. Where the Sakas and the Kusana, फिर मथुरा में भी यही था, और उसके बाद फिर अमरावती टेरिटरी सलवाना. द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक स्कल्पचर आज हम क्लियर कर रहा था, लेकिन क्या हो गया कि उसका जो क्या इसको बोलते हैं वोटर आईडी कार्ड ही बक्सा में था. क्या कर बोला कि शाम में करेंगे, तो मैंने वो अम्मी निकाल रहे थे, लेकिन करवा देंगे तुम अपना नंबर मत देना, तुम अपने भाई का नंबर दे देना, उसी को जाएगा. आधा कर दिए थे, हाँ आधा कर दिए थे, तो बोला अरे वो नहीं लगेगा मेरे को. बोला ठीक है दिखाओ, क्यों कर देंगे. Amravati, that is the Sabanas, Gandhar, that is Sagas and Kusana, Mathura, that is Sagas and Kusana. The influence of the Greek sculpture is very evident in the Gandhar school, while the Mathura school evolved as the indigenous. The Greek sculpture is very evident in 1446-47. Nepalus, that is the Greeks sailor, discovered the monsoon sea route to India from West Asia. Important ports were the Barai, Gaza, that is Baroch, and Barbaricum, that is the Orchid. Question pose Orchid, Adikamedu, that is the Kodaiku, according to the Periplus, near Pondicherry, eastern coast. Bullion was flowing out of the Rome to the India, that is the planning. बोला था ऐसा. Geography का, that is the Strabo, natural history, that is the planning. By the way, I want to ask what you have been up to and which subject. Currently, I am studying the history, and I want to ask just trying to study anything else. Natural history, the planning Periplus of the Erythraeid, that is sea unknown. India has contact with the Central Asia, China, Gracia, Roman world, and the Southeast Asia. ठीक है. Post modern era, या the pre-Gupta period, that is the 185 BC से लेकर 319 AD. That is 185 से लेकर 319 AD, 185 से लेकर 319 AD, 185 BC से लेकर 319 AD, 185 BC से लेकर 391 AD. Post-modern period and the pre-Gupta period. Post-modern period or the pre-Gupta period. Post-modern period, that is the post-modern period, pre-Gupta period, that is the 185 BC से लेके 185 BC से लेके 319 AD. 185 BC से लेके 319 AD, that is post-modern period, that is the pre-Gupta period.
पोस्ट मॉडर्न पीरियड या द प्री गुप्ता पीरियड दैट इज द 185 से लेकर 319 AD 185 BC से लेकर 319 AD दैट इज द नेटिव सक्सेसर ऑफ द मौर्यास वेयर द सुंगा डायनेस्टी सुंगा हसीन मासुका सुका सुका हसीन मासुका सुका दैट इज सुंगा एंड का दैट इज द कन्वा उसका फिर सतवाना डायनेस्टी एंड द फिर चेती यादव चेडी डायनेस्टी ऑफ द कलिंगा चेती यादव चेडी डायनेस्टी ऑफ द कलिंगा चेती यादव चेडी डायनेस्टी ऑफ द कलिंगा। बट आपने तो कहा मैंने PCM ले रखी है PCB बायो करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर द BPSC। सबसे पहले कौन सा है सुंगा डायनेस्टी फिर कन्वा फिर सतवाहना फिर चेदी यादव चेदी डायनेस्टी दैट इज द नेटिव सक्सेसर ऑफ द मौर्य सुंगा डायनेस्टी 185 से लेकर 319 AD ठीक है। नेटिव सक्सेसर ऑफ द मौर्य सुंगा डायनेस्टी 185 BC से लेकर 373 BC दैट इज द कैपिटल विदिशा MP सुंगा डायनेस्टी का कैपिटल विदिशा MP सुंगा डायनेस्टी का कैपिटल विदिशा MP दैट इज द कैपिटल विदिशा MP that is the Sunga dynasty का capital Vidisha MP that is the Sunga dynasty was established by Pushyamitra Sunga a Brahmin commander in chief of the last Mauryan ruler named Brihadarth that is the Sunga dynasty was established by Pushyamitra Sunga a Brahmin commander in chief of the last Mauryan ruler named Brihadarth in 185 BC. Pushyamitra was a staunch adherent of the Orthodox Hinduism. However, the great Buddhist Stupa at the Barod in MP Vidisha MP क्या था कैपिटल था लेकिन Barod MP में was built during the reign of the Sungas. Pushyamitra was succeeded by his son Agnimitra, the hero of the Kadazas Dharma Malvika Agnimitra. Oh sorry PCB, yes PCB. Sunga dynasty was established by Pushyamitra. ये हो गया इतना तो हो चुका है इसके बाद after Agnimitra the series of the weak rulers such as the Vasumitra, Vajramitra, Bhagabhadra or Devabhuti followed leading to the decline of the dynasty. During this rule there was a revival of the Brahmanical influence. The Bhagavad religion became important. The Bhagavata religion became important. Patanjali, author of the Mahabhasya, was born at Gonada in central India. Patanjali was born. Patanjali, author of the Mahabhasya, that is, was born at the Gonada in central India. Patanjali was the priest of the two Asmani Yajna performed by the Pushyamitra Sunga. In art, the Barhot Stupa is the most famous monument of the Sunga. Barhot Stupa, that is in the Barhot MP. The fine gateway railing which surrounds the Sanchi Stupa built by Ashoka was constructed during the Sunga period. The fine gateway railing which surrounds the Sanchi Stupa the fine gateway railing which surrounds the Sanchi Stupa, the fine gateway railing which surrounds the Stupa is built by Ashoka was considered during the Sunga period. Other example of the Sunga dynasty was the Bihar, the Chaitya, the Stupa of the Bhaja, that is the Pune, and Amravati Stupa, Nasik, Amravati Stupa or Nasika Chaitya, Nasika Chaitya. गंदा ज्यादा होगा। हाँ, तेल नहीं डाली थी। तेल डाल के करोगे ना ज्यादा अच्छा साफ होगा। पहले भी नहीं दी थी। पहले तो किसी दिन दी होगी ना। तेल तो गंदा देता है। Kanva dynasty, that is the 73 BC से लेकर 28 BC, 73 BC से लेकर 23, that is the capital is Patliputra. Kanva dynasty, that is the 73 BC से 28 BC, that is Patliputra. Kanva dynasty, that is the 73 BC से लेकर नहीं हाँ
Karwa dynasty 73 BC से लेके 28 BC, that is the Patliputra. In 73 BC, Devabhuti, the last ruler of the Sunga dynasty, was murdered by his minister Vasudeva, who usurped the throne and founded the Kanwa dynasty. The period of Kanwa came to an end in the 28 BC. Came to an end in 28 BC. Came to an end in 28 BC. ठीक है. फिर सतवाहना डायनेस्टी 60 BC से लेके 25 BC तक. ठीक है. नहीं, 60 BC से 225 BC तक. फिर the Cheti dynasty of the Kalinga. The history of the Kalinga after the death of the Soga is round in obscurity. A new dynasty known as the Cheti or Cheti dynasty rose in the region, possibly in the 1st century BC. Possibly in the 1st century BC. Our information about this derives slowly from the Hathi Gumpa dynasty that is near the Bhubaneswar, Orissa of the Kharavela. Oh my God! अब नाम का मतलब क्या? हिम देविया. Cheti as the Cheti dynasty of Kalinga. The history of Kalinga after the death of the Asoka is shrouded in the obscurity. A new dynasty arose that is rose in the region, possibly that is was probably in the 1st century. Agricha, ये है मल्ला. उसी में होगा. वो कर कापन नहीं होगा. उसी में होगा. वो कुछ सामान नहीं निकालना. निकाले तो थे, तो किसी और में रखे होंगे. Our information about the dynasty is derived slowly from the Harigumpa inscription near Bhubaneswar, Orissa of the Kharavela, that is the third ruler of the dynasty. The follower of dynasty Kharavela, the ruler of the dynasty, the Kharavela was a liberal patron of the Jain monks, for whose residence he constructed caves on the Kharavela. He was a follower of Jainism, for whom he constructed caves on the Udayagiri hills near Bhubaneswar. In Orissa. नहीं आ रही क्या? यस, बहुत ज़्यादा. सो जाएंगे तो फिर डायरेक्ट रात के 8 बजे उठेंगे. Okay, now क्या एक बार और फिर से. That is post-modern period, that is the pre-Gupta period, जो कि स्टार्ट होता है 185 BC से 319 AD. That is the पहला है सुंगा डायनेस्टी. सुंगा डायनेस्टी का रूलर पुष्यमित सुंगा. कैपिटल that is MP native successor of Sunga dynasty 185 से लेकर 73 BC. That is the Sunga dynasty was established by Pushyamitra Sunga, a Brahmin commander-in-chief of the last Mauryan ruler named Brihadrat. In 185 BC, the Pushyamitra was a staunch adherent of the Orthodox religion. However, the great
Buddhist stupa at the Borod in MP was built during the reign of the Sunga. Kusamit was succeeded by his son Agnimitra, who was the Kalidasa's hero in the drama that is Malavika Agnimitra. After Agnimitra, a series of big rulers such as the Basumitra, Vajramitra, Vagabhadra and Devabhuti followed, leading to the decline of the dynasty. During their rule, there was a revival of the Brahmanical influence. There was a revival of the Brahmanical influence. The Bhagavata religion became important. Patanjali, author of the Mahabharata, it was born at the Gonada, that is in central India. Patanjali was the priest of the two Asmabet Yajna performed by Pusyamurti Sunga. In art, the Barut stupa is the most important monument of the Sunga period. The fine gateway railing which surround the Sanji stupa built by the Asoka was constructed during the Sunga period. Other example of the Sunga dynasty art is the Bihar Chaitya and the stupa of the Bhajja, that is Amravati stupa, and the Nasika stupa. यार जो लटक रहा है ये तुम्हारा लगती है क्या? Yes. It is called dream catcher. So if you will dream something, it will catch and that will be fulfilled. It's a dream catcher, not nazar. The fine gateway railing which surround the Sanchi stupa built by the Asoka was constructed. The Beirut stupa is the most important famous monument of the Sunga period. The fine gateway railing which surround the Sanchi stupa, built by the Asoka was constructed during the Sunga period. Other example, that is the Bihar Chaitya stupa of the Bhajja Pune, that is Amravati stupa, and the Nasika Chaitya. Kanva dynasty 73 BC से लेकर 28 BC, that is the capital Kanva dynasty, that is 73 BC से लेकर 28 BC, that is the Patliputra. In 73 BC, Devabhuti, the last ruler of the Sunga dynasty, was the last ruler of the Sunga dynasty. The last ruler of the Sunga dynasty, that is the Devabhuti, was succeeded. Devabhuti, the last ruler of the Sunga dynasty, was murdered by minister, that is Vasudeva. Devabhuti था Sunga dynasty का, वो उसको मारा गया वासुदेवा के द्वारा, जो कि Kanva dynasty का founder बना, who usurped the throne and founded the Kanva dynasty. The period of Kanva ruler came to an end in 28 BC, that is 73 BC से लेकर 28 BC तक ही चला. ऐसे कौन सी चीज़ है जो समुद्र में पैदा होती है और घर में? यह आंसर बताओ विचार. ऐसी कौन सी चीज़ है? पता है लाफिंग बुद्धा असला नहीं आती. यू आर राइट. कौन सी समुद्र में पता नहीं. आई डोंट नो. सिस्टम का नहीं वेस्ट और पानी को नहीं. Kanva dynasty was 73 BC से लेके 28 BC तक. उसके बाद फिर है लास्ट में द चेरी डायनेस्टी ऑफ द कलिंगा.
The history of the Kalinga after the death of the Asoka is shrouded in obscurity. A new dynasty known as the Cheti or the Cheti dynasty rose in the region probably in the 1st century BC. Our information about this dynasty is derived slowly from the Ati Gumfa inscription of the Karavela, Odisha, Bhubaneswar, that is the third ruler of a dynasty. A follower of the Jainism, that is the Karavela, was a liberal patron of the Jainism. A follower of Jainism, Karavela was a liberal patron of Jainism for whose residence he constructed caves on the Udagiri hills, where near Bhubaneswar in Odisha. Foreign successor of the Mauryas. सबसे पहले कौन था? पढ़ो बाबू। आज आपका नाम पूछा है तो mistyping. What mistyping? A follower of Jainism, Karavela was a liberal patron of the Jain monks whose residence he constructed caves in the Udagiri hills near Bhubaneswar, Odisha. उसके बाद सतवाना डायनेस्टी डेट इज 60 BC से लेके 225 AD. सतवाना डायनेस्टी डेट इज 60 BC से 225 AD. सतवाना डायनेस्टी 60 BC से 225 AD. सतवाना डायनेस्टी डेट इज 60 BC से 225 AD. सतवाना डायनेस्टी डेट इज 60 BC से 225 AD. That is the प्रतिष्ठाना या पैठान महाराष्ट्र. सातवाहना डायनेस्टी 60 BC से 225 AD. 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 That is the Satvahana dynasty. 60 BC से लेकर 225 AD. That is the capital प्रतिष्ठाना. That is पैठान महाराष्ट्र. The most important Satvahana dynasty, that is the 60 BC से 225 AD. That is 60 BC से 225 AD. That is capital प्रतिष्ठाना पैठान महाराष्ट्र. कैपिटल प्रतिष्ठाना पैठान. और कन्वा डायनेस्टी का पाटलिपुत्र और चेरी डायनेस्टी का कलिंगा और सतवाहना डायनेस्टी का प्रतिष्ठाना पैठान महाराष्ट्र. The most important of the native successor of the Maurya in the Deccan and the central India were the Satvahana. The most important of the native successor of the Mauryas in the Deccan and the central India were the Satvahana. The Satvahana was considered to be identical with the Andhras who were mentioned in the Purana. The Satvahana were identical with the Andhras who were mentioned in the Purana. The early Satvahana kings appear not in Andhra but in Maharashtra. The early Satvahana kings appear not in Andhra but in Maharashtra, where most of their early inscriptions have been found. Simuka, that is the 60 BC. Simuka, सबसे पहले Simuka, that is 60 BC से लेकर 37 BC, was the founder of the Satvahana dynasty. Satakarni, that is the Satakarni. क्या किसकी प्रमोशन कर रही हो? BPSC.
The most important of the native successor of the Mauryas in the Deccan and Central India was Satavahana. The Satavahana are considered to identical with others who were mentioned in the Puranas. ठीक है. Okay, Simuka was the founder of the Satavahana dynasty. Satkarni was the third ruler raised in power and prestige through conquest. Satkarni was its third ruler raised in power and prestige through conquest. Satkarni won. एक क्वेश्चन आंसर होती 20 में क्या है? लैंग्वेज. ऐसे कौन से जो कार्ड देने पर जस मनाया जाता है? जस अब पता है कॉम्पिटिटर हो कार्य आ गया है देखते हैं. आंटी बोल रही आवाज आ रहा है. यस. तो सबसे पहले सिमुका था. सिमुका वाज द फाउंडर ऑफ द Satavahana dynasty. फिर सतकर्णी that is सतकर्णी वन was the third ruler जो कि प्रेस्टीज और पावर से कॉन्क्वेस्ट और रेज्ड विद पावर हाला. The 17th ruler of the 17th ruler who was the author of the घता सपथासती और सता सताई in Prakrit. Bunadhi, the author of the Brihad Katha, was the contemporary of Hana. It was Gautami Putra Satkarni who revived the Satavahana power and defeated the Saka Satrapa Nahapana. He was the great Satavahana ruler, that is the 23rd Satavahana ruler. Vasishtha Putra Sri Satkarni, 24th ruler, was married to the daughter of Saka Satrapa Rudraman. It was Gautami Putra Satkarni who revived the Satavahana power and defeated the Saka Satrapa Nahapana. ठीक है. He was the 23rd ruler of the he was the 23rd greatest ruler of the Satavahana. उसके बाद वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी. वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी क्या है कि वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी its 24th ruler was married to the daughter of the Saka Satrapa Rudraman but defeated by him twice. यजना श्री सतकर्णी. देखो सबसे पहले कौन सा था? गौतमी पुत्र सतकर्णी, फिर वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, फिर वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी और उसके बाद फिर यजना श्री सतकर्णी. फिर कौन है? यजना श्री सतकर्णी. Yajna Sri Satkarni was the last ruler. Pulamavi IV is the 30th ruler who was the last. Yajna Sri Satkarni was the 27th last great ruler. फिर Pulamavi IV its 30th ruler was the last Satavahana ruler. Satavahana was finally succeeded by the Ikshvaku, that is Ikshvaku in the 3rd century AD. Satavahana started the practice of donating land with physical and administrative unity to Brahmanas and the Buddhist monks, which eventually became their authority. The earliest inscription evidence of the land grant in India belongs to the 1st century BC. Under Satavahana, many chairs, worship halls, and the Bihara monastery were cut out of the rock mainly in the northwestern Deccan or the Maharashtra. In the northwestern Deccan and the Maharashtra. Under the Satavahana, many chairs, that is worship halls, and the Bihara monastery were cut from the rocks mainly in the northwestern Deccan and the Maharashtra. The famous example were the Nasik, Kanheri and Karle. It's a large round structure erected over a sacred relic was seen scattered all around Ellora. The most famous of this attributed to the Satavahana period was the Amravati. हम पहले ही हटा दिए थे. ये 96%. मेरा ठोकरों से कुछ सुनाता है,
Yeah, I know. You can talk open words. Bhagalpur, yeah. How you know me that I am from Bhagalpur? Are you from Bhagalpur? Kulambi was the last ruler, that is the 30th ruler. Amravati, that is the Sadvana Katha, and Nagarjuna Kunda, that is the Supa's large round. The Supa large round structure erected over a sacred relic were seen scattered all around Lora. The most famous for this attributed to the Satvana dynasty.
सतवाना इसका सी मुका सबसे पहला था, उसके बाद फिर सतकर्णी हुआ, डेट इज द हाला. The 17th century, the seventh ruler was the author of the Gatha Saptasati or the Satai Sute in the Prakrit, that is the Gunati, the author of the Brihat Katha in Prakrit was the of Hala. It was Gautami Satkarni who revived the Savana power and Satrap Nahapana. He was the greatest Satvana ruler, that is the 20th Satvana ruler. He was the greatest Satvana ruler, that is the 23rd. मत करो, ये गलत है. टू द DSP मुझे पैसा मांग रहा है, आप देने से रहे. फिर उसके बाद क्या है, गौतमी पुत्र सतकर्णी. He defeated the Satrap Nahapana. He was the greatest Satvana ruler and 23rd Satvana ruler. फिर वशिष्ठ पुत्र Vashishtiputra Sri Satkani related the 24th ruler was married to the daughter of Saka Satrapa Rudraman but defeated by him twice. Yajna Sri Satkani related the 27th ruler was the dynasty last great ruler. Pulamavi for its last ruler. सबसे उससे पहले क्या था, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, उसके बाद फिर यजना श्री सतकर्णी. अरे कर लेते नाम सुंदर और काम Yajna Sri Satkani, that is the 27th ruler of the Vadas dynasty, last great ruler. Yajna Sri Satkani, that is देखो Yajna Sri Satkani, that is the 27th ruler was Yajna Sri Satkani, that is the last ruler. Yajna Sri Satkani, the last great ruler. फिर पुलामवनी पुलामावी, that is the Pulamavi. Instagram ID बताओ. I don't use this Instagram. Pulamavi, that is the that is ruled by the last Satvana. Satvana was succeeded by the ex-Guru in the 3rd century AD. Satvana started the practice of donating land with physical and administrative immunity to the Brahmanas and the Buddhist monks. उसके बाद फिर Buddhist monks, which eventually became their authority. And the earliest inscriptional evidence of the land granted in India belongs to the 1st century AD. 1st century BC. Under the Satvana, many chairs, worship halls, and the Vihara monastery were cut out from the main rocks, mainly in the northwestern Deccan or the Maharashtra. The most famous was the Nasik, Kanheri, and the Karle. It's a large round structure erected over a sacred relic wall were seen scattered all around Ellora. The most famous of these attributed to the Satvana period are the Amravati, that is the sculpture treasure house, and the Nagarjuna Kunda.
The official language of the Satvana was the Prakrit. The Satvanas issued their coins in lead, that is mainly copper, bronze, and protein. Satvana in lead, that is the copper, bronze, or protein. Lead. The official language of the Satvana was the Prakrit. The Satvana issued their coins in the lead, mainly protein, copper, or bronze. Protein, copper. मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, पर मैं नहीं दूँगी क्योंकि मैं खुद पापा के पैसों में पढ़ रहा हूँ. मैं भी अपने पापा के पैसे पे ही पढ़ रही हूँ, इसीलिए तो मांगी. Satvana dynasty, that is the 60 BC से 225 AD. 60 BC से 225 AD. ठीक है, तो कैपिटल इसका क्या है? प्रतिष्ठाना यादव पैठान, that is महाराष्ट्र. प्रतिष्ठाना यादव पैठान महाराष्ट्र. सतवाना डायनेस्टी 60 BC से लेकर 225 AD. 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 That is the most important of the native successor of the Mauryans. The Satavahana dynasty 60 BC से लेकर 225 AD. Capital Pratisthana or the Pathan, that is Maharashtra. The most important of the native successor of the Mauryas in the Deccan and the central India, where the Satavahana were considered to be the identical with the Andhras who were mentioned in the Puranas. The early Satavahana ruler appear kings appear not in Andhra but in the Maharashtra, Pratisthana or the Pathan, where most of their early inscriptions have been found. Simukar, that is the 60 BC से लेकर 37 BC was the 60 BC से लेके तो मत मांगो ना यार, इतनी सीरियस पढ़ाई हो शिशु के माइक पे बोली कि मैं तो चंदा करके पढ़ती थी न्यूज़ स्टोरी लाइन तो बोलती हूँ स्पीच मिल जाएगी मेरे के लिए. तो आई विल डेफिनेटली से कि मैं चंदा मांगते थे, लेकिन कोई दे तो सही, नहीं देता है कोई. डोंट बी दिस मच सीरियस यार, ठीक है मत दो, नो वरीज. Simukha was the founder of the Satavahana dynasty. उसके बाद फिर सताकर्णी हुआ, that is the third ruler who raised his power and prestige through the conquest. फिर हाला the 17th century. The seventh ruler was the author of the Gatha Saptastati or the Satasai in the Prakrit. Gunad, that is the author of the Brihat Katha in Prakrit, was the contemporary of wait and watch. What to watch now? Simukha was the founder of the Satavahana dynasty, that is Satakarni, that is the third ruler raised his power and prestige through the conquest. Hala, that is the 17th ruler, was the author of the Gatha Saptasati or the Satasatai in the Prakrit language. ठीक है. One of the author of the Brihat Katha in Prakrit was the contemporary of Hala. It was Gautamiputta Satkarni, that is 106 to 130 AD, who revived the Satavahana power and defeated the Saka. Gautamiputta Satkarni, who revived the Satavahana power and defeated the Saka Satrapa Nabana. He was the great Satavahana ruler, that is the 23rd ruler. उसके बाद कौन आया? Vasishthiputra Sri Saptari, that is 24th ruler, who was married to the daughter of the Satrap Rudraman, Saka Satrapa Rudraman, but defeated by him twice. Yajna Sri Satkarni, that is the 27th ruler, was the dynasty's last ruler. Pulamavi, that is 4. Its 30th ruler was the last Satavahana ruler. Satavahana was finally succeeded by the Ikshvaku in the 3rd century BC. Satavahana started the practice of donating land with
physical and administrative immunity to the Brahmanas and the Buddhist monk, which eventually became their authority. The earliest inscriptional evidence of the land grant in India belongs to the 1st century BC. Under the Satavahanas, many Chair worship halas Viharas monastery were cut out from the rocks, mainly in northwest Deccan or the Maharashtra. Under the Satavahanas, many Chair worship halls and the Viharas monastery were cut out from the rocks, mainly in the northwestern Deccan or the Maharashtra. Under the Satavahanas, many chairs, that is worship hall and Viharas monastery were under the Satavahanas many chairs many chairs, worship halls and the Viharas monastery were cut out from the rocks. Under the Satavahanas, many chairs, worship halls and the Viharas monastery were cut out from the rocks, mainly in the northwestern Deccan and the famous example were the Nasik, Kanheri and the Karle. This is a large round structure erected over a sacred lake were seen scattered all around Ellora. This is the large round structure erected around a sacred relic was seen all around Ellora. The most famous of these attributed to the Satavahana period are Amravati, are sculpture treasure house and the Nagarjuna Konda was Amravati. Stupa large round structure erected over a several was scattered all around Lora. The most famous of this attributed to the Satavahana period was the Amravati, that is a sculpture treasure house, and the Nagarjuna Konda. The official language of the Satavahana was the Prakrit and where the Prakrit and the official language of the Satavahana Prakrit. The Satavahana issued their coins in lead, mainly the copper, bronze and protein. कॉपर ब्रॉन्ज एंड पोथी ठीक है इतना तो हो गया Hello Didi, hello OMG Didi. Preparation here. I was revising the chapters again. Hello, Mita. I'm good.
new back, old setup, used to like. Yes. Start कर दी. Yes. फ्री है, इसी लैब चैनल सेव कर लेना. एसएससी लैब चैनल. हेलो कन्हैया. एसएससी लैब चैनल. ओके वेट. एसएससी लैब चैनल. कैसे हो रही है? आई एम गुड. आप बताओ. राइट. They start. I have already started. तुम भी कर लो.
అదే ఉన్నా My favorite class. I was busy.
Thank you. इस वीडियो में हम लोग PLFS पीरियोडिक लेबर कोर्स सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अगर आप देखें तो लास्ट के एग्जाम्स में 1 से 2 सवाल आप ध्यान से देखने को मिल जा रहा है और हम कोशिश ये करेंगे कि बहुत ही आसानी से इसको पूरे का पूरा डिकोड कर पाएं। जो भी क्वार्टरली रिपोर्ट्स होंगी, मंथली रिपोर्ट्स होंगी, एनुअल रिपोर्ट्स होंगी, सबकी पर बात करेंगे। सारे डेटा पे ध्यान लेकर जाएंगे। पर जैसा कि हम लोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किए थे, ये हम जरूर ध्यान देंगे कि जो डेटा है आपका अलाटमेंट है वो आपको प्रॉब्लम ना करे, आपको परेशान ना करे। रात हम एक ट्रेंड समझे, एक पैटर्न समझे, एक कॉन्सेप्ट को आगे करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात आपको ये बताएं कि PLFS कंडक्ट करना कौन है, मतलब कंडक्ट कौन करता है। याद रखिएगा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कंडक्ट करता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस किसके अंदर आता है? तो ये मॉन्स्टर के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये पीडीएफ आपको एग्जाम में मिल जाएगा, पर मेरे हिसाब से पीडीएफ में ज्यादा चीजें हैं। हम जब बोलेंगे तो आपको बताते जाएंगे क्या याद करना है, कितना याद करना है, कैसे याद करना है। तो बेटर है कि आप वीडियो के बाद उस वीडियो को पढ़िएगा। ठीक है, तो एनएसओ कंडक्ट करेगा, किसके अंदर है? मॉन्स्टर के अंदर। अब एक बात आपको बताना, तो PLFS ऐसा नहीं कि बहुत पहले से आया था, नया चीज है। PLFS आपका 2017 में पहली बार लॉन्च हुआ और इसके लॉन्च होने के पीछे का कारण क्या है ना, ये टास्क फोर्स बना था। देखो क्या था कि पहले क्या होता था ना, हर 5 साल पर एम्प्लॉयमेंट का डेटा जनरेट होता था। अब क्योंकि जो चेंजिंग अभी आज के डेट में जैसे AI आ रहा है, जैसे हम लोग का टेक्नोलॉजी बहुत हो रहा है, तो हमको जॉब पैटर्न को समझने के लिए हमको और बेटर डेटा चाहिए। ये बेटर डेटा को पाने के लिए एक टास्क फोर्स बना, नेशनल टास्क फोर्स। क्या था उसका नाम? था टास्क फोर्स ऑन इम्प्रूविंग एम्प्लॉयमेंट डेटा। टास्क फोर्स ऑन इम्प्रूविंग एम्प्लॉयमेंट डेटा। ये कब बना था? एम्प्लॉयमेंट डेटा ये कब बना था? 2017 में आपका बना था। इसके चेयरमैन कौन थे? इसका हेड कौन था? तो नीति आयोग के उसमें वाइस चेयरमैन थे अरविंद पानागढ़िया। अभी ये किस पोस्ट पर है आप बताइए। ठीक है, अरविंद पानागढ़िया जो समय पे उनके अंदर एक टास्क फोर्स बना था इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट डेटा। और उस टास्क फोर्स उन्होंने कहा था कि एक समय आ चुका है हमारे पास, एक बेटर डेटा होना चाहिए। उस बेटर डेटा के लिए स्टार्ट किया गया पीरियोडिक लेबर कोर्स सर्वे, PLFS। ठीक है, अब ये समय के साथ 2017 में स्टार्ट हुआ, अभी हम 2026 में आ चुके हैं, तो ये समय के साथ इवॉल्व होता जा रहा है, इम्प्रूव होता जा रहा है। ठीक है, या इम्प्रूव हो रहा है, क्या इवॉल्व हो रहा है उस बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले हम आपको चाहते हैं ना, अच्छा काम क्या है इस PLFS का? सिंपल है भाई, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बताएगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो
अनएम्प्लॉयमेंट को जेंडर के हिसाब से कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, तो मतलब एक काम नहीं है, सब तरीके का काम करता है। ठीक है, पहले ये लेवल क्यों पड़ा आपको बता दिया, पहले 2017 से पहले होता था वो प्रिंट मीडिया, मतलब हर 5 साल में जनरेट होता था। उसके लिए नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पानागरिया साहब का एक कमेटी बनता है, जो भी कहते हैं यार हमको एनुअल अकाउंट सर्वे करना पड़ेगा। अब समय के साथ अब वो मंथली भी होने लगा। ठीक है, अब आप एक बात बताने देखो, अलग अलग बॉडीज, अगर आप पहले की बात करोगे ना, तो एक बॉडी था NSSO, इसका फुल फॉर्म क्या था, नेशनल कहाँ का है, सुनो अच्छे से, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, NSSO था। NSSO का काम क्या था, इनका काम था कि एकदम अपना बैग टांग करके जाकर घर घर जाकर के डेटा कलेक्ट करना। तो NSSO का काम क्या था, डेटा कलेक्ट करना। ठीक है, डेटा कलेक्ट करना, ये डेटा कलेक्ट करके डेटा किसको था, तो डेटा कलेक्ट करके CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस को देता था ये डेटा, और ये रिपोर्ट पब्लिश करती थी। ये आपका रिपोर्ट पब्लिश करती थी। पर समय के साथ क्या हुआ कि आपको देखेंगे 2000 में एक कमेटी बनी। इस कमेटी का नाम क्या होता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन। स्टैटिस्टिक्स कमीशन, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन की बात होती है, ये दोनों के दोनों जो है आपके स्टैटिस्टिक्स मंत्रालय के अंदर जा रहे हैं। तो NSSO डेटा कलेक्ट करता है, इसका एक अलग बॉडी है, इसका एक अलग हेड है। CSO रिपोर्ट बनाता है। अब जो आदमी रिपोर्ट बना रहा है उसको डेटा अलग तरीके से चाहिए। हम कह रहे हैं कि मान लो सेम डेटा है, पर आपको चाहिए 10 सेगमेंट में, 10 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम में चाहिए। हम चाहते हैं कि पहले ये पता करें, आगे बढ़ के पता करें, तो इन दोनों के बीच में मिसमैच होता था, कॉन्फ्लिक्ट होता था। इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए 2000 में नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन बनाया जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन के हेड कौन होंगे, रविंद्र राजन कमेटी बनाई जाती है। रविंद्र राजन कमेटी रिकमेंड करता है कि अब समय आ चुका है कि हम NSSO और CSO को मर्ज कर दें, इन दोनों को मिला करके एक सिंगल बॉडी बना दें। काट दो ना दोनों के। NSO पहले था नेशनल सैंपल सर्वे, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इन दोनों को मिला करके अब NSO बना दें। अब क्या होता है कि 2005 में आपके मनमोहन सिंह सरकार रहता है। अब आपको लोग पता है कि मतलब वेरी 9 को दिए थे। सोमवार मंगल को नहीं दे। इकोनॉमिक्स उनको पता था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या करते हैं 2005 में रविंद्र राजन कमेटी के जो रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, पर एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से उसको अडॉप्ट कब किया गया, तो 2019 में मोदी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो अब हम आपको बस दो बात बता रहे हैं। 2005 में राजन कमेटी, एक कमेटी को अरविंद पानागरिया का बताया, दूसरा कमेटी आपको यहाँ पर रविंद्र राजन कमेटी बनाई। क्यों, क्योंकि वो NSSO और CSO इन दोनों को मर्ज करवा देते हैं। और आज के डेट में यही हमारे पास NSO है। आपने पढ़ लीजिएगा, NSO का अलग काम है, CSO का अलग काम है। 2000 में होता है, 2005 2019 आपको सब बता दिया। ठीक है, NSO है। NSO डाटा कलेक्ट करता है। NSO क्या करता है, डाटा कलेक्ट करता है। CSO क्या करता है, डाटा एनालाइज और GDP बनाता है। NSO डाटा कलेक्ट करता है, सैंपल सर्वे था ना। CSO क्या करता है, डाटा एनालाइज करता है और GDP बनाता है। दोनों पहले से मॉस्ट्री के अंदर थे। अब 2000 में रंगराजन कमेटी मर्ज किया दोनों को। 2005 में गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली, एंड 2009 में एक्चुअल जो है इम्प्लीमेंट करके NSO बना दिया गया। ठीक है, NSO पढ़ लीजिएगा, NSO वाला काम है, CSO वाला काम है। 2000 में होता है, 2005 2019 आपको सब बता दिया। ठीक है, अब कुछ की टर्म्स हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो आसान है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और ये 4 चीज आपको बताना चाहते हैं। सिंपल सी बात समझना, ठीक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो देखो, हमको समझने में जितना दिक्कत, अगर मतलब आपको समझने में आसानी के लिए जो भी लोग ये टर्म बनाते हैं ना, उनके पास आपसे ज्यादा टेंशन होता है कि ऐसा बनाओ टर्म कि नाम सुन करके लोग समझ पाए। तो नाम से ही समझो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो कि गाँव है, इस गाँव में 100 लोग रहते हैं। ठीक है, इस 100 लोगों में 30 लोग आपके गोलंबर चौराहे के पास, लेबर मार्केट के पास आकर के अपना सामान छीनने हथौड़ी लेके खड़ा रहेंगे, वो काम ढूंढने के लिए। तो ये जो 30 लोग काम ढूंढ रहे हैं ना, यही है लेबर्स। जो 30 लोग काम ढूंढ रहे हैं, लेबर। तो परसेंटेज ऑफ लेबर जो या तो काम कर रहा है या तो काम खोज रहा है एक्टिवली। ठीक है, इसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। अब इस 30 लोग में से आप देखिएगा कि 26 लोग को काम मिला, तो 26 लोग आकर भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देंगे। इन 26 लोग के अलावा देखोगे तो 4 लोग बच गए। इन 4 लोग क्या करेंगे, वापस घर आकर के अखबार पढ़ेंगे, अखबार में देखेंगे कोई नया इश्तिहार आया है क्या, जिसमें बताया जा रहा है कहीं पर कोई काम है, कहीं पर कोई वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर क्या है भाई, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो उल्टा है। जो कि लेबर का मतलब ये नहीं कि आज वो उल्टा गिट्टी उठा रहा है तभी लेबर है। वो घर में भी बैठा है, उसका तबियत भी खराब है, वो काम नहीं मिला, उसको वापस आ गया, जो भी हो वो लेबर रहेगा। अब उन लेबर में से कुछ लोगों को काम मिलेगा, जिनको काम मिलेगा उनको वर्कर कहा जाएगा। तो ये दोनों पॉपुलेशन पर रहता है। ठीक है, मतलब दिस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है, तो जो लोग खोज रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, अपॉन वर्कर पॉपुलेशन। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स इन द पॉपुलेशन। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स बटा जो आपका लेबर फोर्स। ठीक है, याद रखना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका लेबर फोर्स के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की गणना श्रम बल पर आधारित होती है, कुल जनसंख्या पर नहीं। उसके बाद आता है नीट। नीट का मतलब क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखो बात बताते हैं, आज एक हम यूथ है, ठीक है, मान लेते हैं एक 22 साल का लड़का है। अब ये 22 साल का लड़का काम नहीं कर रहा है, तो हम इसको जब कोई डॉक्यूमेंट मान लो बना, कोई सर्वे हुआ, तो वो उसको एक बेरोजगार की तरह डिक्लेयर करेगा। पर क्या वो बेरोजगार है, नहीं, वो बेरोजगार नहीं है, क्योंकि वो एक प्रोफेशन परस्यू कर रहा है एज अ स्टूडेंट। वो पढ़ाई कर रहा है, वो स्किल सीख रहा है, वो XYZ जो भी करे, बट ही इज अ पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर। ही इज अ पोटेंशियल कंट्रीब्यूटर। आज नहीं तो कल वो हर जगह कंट्रीब्यूट करने वाला है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एकदम खाली रहते हैं, जो कि आपका ना तो काम कर रहे हैं, ना तो पढ़ाई कर रहे हैं, ना तो कुछ सीख रहे हैं स्किल। ऐसे लोगों को कहा जाता है द वंस हु आर द कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स डेमोग्राफिक डिजास्टर, कि हमारा जो एज है उसको एकदम मतलब वो एक्चुअली देखो एक तरह का वेस्ट टाइप का हो गया ना। तो यही है यूथ दैट इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग। तो याद रखना, हो सके इसका कोई फॉर्म नहीं। नीट का मतलब क्या होता है, ये नीट का मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है, रादर इट इज यूथ नॉट एम्प्लॉयड, नाइदर एजुकेटिंग या फिर आपका ट्रेनिंग, कुछ भी इनमें से नहीं कर रहा है। ठीक है, बढ़िया। अब आ जाओ थोड़ा अब youth not in employment
education and training. Youth not in employment, education or training. ट्रेन एग्जामिनेशन नहीं है, रादर इट इज यूथ नॉट एम्प्लॉयड, नाइदर एजुकेटिव या फिर आपका ट्रेनिंग कुछ भी इनमें से नहीं कर रहा है, ठीक है, बढ़िया। अब आ जाओ थोड़ा एक दो चीज देख लेते हैं एक्स्ट्रा। पहला रिपोर्ट का पब्लिश हुआ तो मई 2019 में आपका पहला रिपोर्ट पब्लिश होता है। उसके बाद आप देखिएगा कि धीरे धीरे मंथली आना स्टार्ट हो जाता है। याद रखना है, याद नहीं रखना है, बस ये याद रखो कि 2017 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और आपका 2026 में आप देखेंगे कि पहला कैलेंडर ईयर का रिपोर्ट है वो पब्लिश होता है। एक चीज आपको यहाँ पर काम रखना है ना कि 2025 जनवरी 2025 में पूरा का पूरा एक रिवैम्प किया गया, पुनर्गठित किया गया डिजाइन को। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उसमें कुछ जरूरियां थी, कुछ और उसको बेहतर बनाना था। उसके सेंटर्स में उसको पहले 1 लाख लोगों से बात करते थे, तो अब उसको और बढ़ाकर 2.72 लाख लोगों तक जाना था। किस तरीके से काम था? पहले क्या होता था, दिसंबर 2024 से पहले आप देखते हैं ना, तो जो सर्वे का वक्त होता था वो आपका जुलाई से लेकर जून होता था। पहले जुलाई से जून होता था। क्यों होता था? क्योंकि खाली देखो जून जुलाई तो खाली मतलब वो एजुकेशनल है, एग्रीकल्चरल ईयर के हिसाब से होता था। पर जनवरी 2025 के बाद आप देखेंगे इसको कैलेंडर ईयर में डाल दिया गया। कैलेंडर ईयर में डालने का मतलब क्या हुआ कि अब वो जनवरी से दिसंबर तक रहेगा। ऐसा क्यों किया गया होगा? इसलिए किया गया ताकि जो बाकी रिपोर्ट्स हैं आपके, मतलब सीपीआई का रिपोर्ट हुआ, डब्ल्यूपीआई का रिपोर्ट हुआ, इन सब के साथ आप ढंग से इसको कंपेयर नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि जून जुलाई एकदम उल्टा पड़ जाता था। तो इसलिए इसको क्या किया गया, सर्वे को इसको कैलेंडर ईयर डाल दिया गया। एफएसयू का मतलब क्या होता है? एफएसयू का मतलब होता है आपका फर्स्ट स्टेज यूनिट्स को मिलाकर के जो गांव ब्लॉक स्टाइल का। तो पहले कितने गांव? 12,800, अब कितने? 22,692। एक एफएसयू में कितने घर पे जाते थे? 8, अब कितने पे जाते हैं? 12। पहले कितने घर होते थे? 1 लाख, अब है 2.72 लाख। कितना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ रिपोर्ट बताओ, आप पे डाल जाते हैं कितने पे जाते हैं? 12। सबसे पहले होता था जुलाई जून में, अब होता है जनवरी दिसंबर, जनवरी से दिसंबर, फिर नहीं सॉरी जनवरी से लेकर दिसंबर तक। उसके बाद फिर हाउस होल्ड पर ऐसे ही डेट पहले 8, अब 12। टोटल सैंपल्स हाउस होल्ड दैट इज 1 लाख, दैट इज 2.72 लाख। कितने घर होते थे? 1 लाख, अब है 2.72 लाख। कितना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बढ़िया। अब आ जाओ रिपोर्ट पर, अब आप पे डाल जाते हैं। 3 तरीके का रिपोर्ट आता है। एक रिपोर्ट आता है एनुअल। एनुअल कब से कब रहेगा आपको पता है? जनवरी से लेकर के आपका दिसंबर तक। उसके बाद आता है मंथली, जो कि हर मंथ आएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो आता है क्वार्टरली, ठीक है। तो क्वार्टरली आ गया, मंथली आ गया, एनुअल आ गया। हम लोग क्या करने वाले, पहले मंथली देखेंगे, उसके बाद क्वार्टरली देखेंगे, ठीक है। अब आओ स्टार्ट की मंथली रिपोर्ट। 3-4 डेटा याद रखना है, बाकी ट्रेंड के हिसाब से काम करना है। ट्रेंड के हिसाब से काम करने का मतलब कि समझना है बात को कि अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा। सबसे पहला क्या लोगों के लेबर फोर्स पार्टी देखो एक बार है, जहां भी देखेंगे ना एलएफपीआर है, तो ये 3 सेगमेंट बताया जाएगा। एक होगा ऑल एजेस का, कि सब एज के, फिर एक होगा 15 ईयर से अबव, एक होगा 15 से 29। तो ये क्या है? ऑल एज का समझ आ रहा है कि सारे एज का, 15 साल से लेकर के आगे तक का, एक 15 से 29। 15 से आगे का अलग और 15 से 29 का अलग क्यों बताना पड़ा इसको ना? वो इसलिए बताना पड़ा क्योंकि भाई 15 से 29 के लिए लेबर मार्केट कंडीशंस है ना। कोई फ्रेश ग्रेजुएट जैसे हम हो गए, आप हो गए, जब हम लोग मान के 22 साल में कोई आदमी ग्रेजुएट करता है, तो जब वो ग्रेजुएट कर रहा है तो उस समय उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो जो लेबर मार्केट है वो उसको अलग तरीके से ट्रीट करता है। सरकार को जो नियम बनाना होगा वो ज्यादा सोच समझ कर बनाना पड़ेगा। सरकार को स्किल डेवलपमेंट पॉलिसीज लेकर आनी पड़ेगी, आरटीडी रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय स्किल्स लानी पड़ेगी। फिर ये सब चीजों के लिए सरकार क्या करती है? 15 से 29 का अलग रिटर्न डालती है, 15 प्लस का अलग रिटर्न डालती है, और एक और एजेस को है, ठीक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ध्यान रखना कितना है? और एजेस का 44.9%। इस डेटा को रखना है क्या? बिल्कुल रखना है। इस डेटा को लगभग 45 से पॉइंट मतलब 44.9% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन श्रम बल भागीदारी दर और एजेस का, ठीक है। अब इसी में आप देख लीजिए कि अगर वो 15 से 29 वर्ष हो जाता है तो उसका 46% है। अगर वो 15 से 29 एज का हो जाता है तो 46% है। ऐसे तो फॉर ऑल एजेस है 44.9 एट द 45, और ऐसे 29 15 से 29 वाले का कितना है? 46। और अगर 15 प्लस का आप देखिएगा तो 59.3% है, ठीक है। 15 से 29 का देखोगे तो 46%। क्यों कम है? क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे, मतलब या तो एजुकेशन कर रहा होगा, ट्रेनिंग कर रहा होगा, तो वो लेबर फोर्स की तरह आप काम नहीं कर सकते हैं उसको, तो कम रहेगा। तो 45% से मतलब 0.1 कम आपका 15 से 29 का 46% है, 15 से प्लस का 59% है। कितना याद रहेगा आपको? अब यहाँ पर आएंगे तो करेंगे। याद रखना है, तो दोनों पिंक वाला तो हमको इसमें देखना क्या है? आपको इसमें देखना है पिंक वाला लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो देखोगे तो अर्बन में मेल का अधिक है पर रूरल में फीमेल का अधिक है। इस चीज को तुमको यहाँ पर देखना है। इसके अलावा तुमको याद नहीं करना है कि अच्छा हम देख रहे हैं तो ऑब्वियसली माइंड में रहेगा कि 58.8% है, 34.6 है, 59.7 है, 22.2 है, बट दिस इज नॉट समथिंग व्हिच यू शुड रिमेंबर। रादर आप बस एक ट्रेंड देखिए क्या है ट्रेंड कि मेल में अर्बन का अधिक है, फीमेल रूरल का अधिक है। फीमेल रूरल का क्यों अधिक है आपको पता है? मेल में रूरल का अधिक है और फीमेल का कम है। अर्बन में दोनों में तो ज़्यादा है, लेकिन जो फीमेल का जो रूरल में है 34.6% तो ज़्यादा है, और 22.2% अर्बन में है, और मेल का 58.8% रूरल में ज़्यादा है, लेकिन कम है, और अर्बन में 59.7%, मतलब 1% ज़्यादा है। और इसमें तो बहुत डिफरेंस है। अर्बन मेल क्यों अधिक है? क्योंकि वो माइग्रेट करके नौकरी के लिए गया, गुजारी होगा। फीमेल का क्यों अधिक है? क्योंकि आपको पता होगा फेमिनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, महिलाएं यहाँ पर रहती हैं तो सिलाई का काम करेगी, बुनाई का काम करेगी, जो कि आप शहर में देखना है आपको, तो ये सब यहाँ पर याद रखना, ठीक है। इसमें क्या है? पॉलिसीज इस लैंग्वेज की आपको बताते हैं। अगला डेटा क्या है? इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक बात याद रखना कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं ना, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उसमें से मेल का सबसे लड़कों का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं। भैया वो कहते हैं वांटिंग टू कंटिन्यू स्टडीज, वो लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं। पर सैडली जो फीमेल जो महिलाएं हैं उनका रीजन क्या है? उनका रीजन है चाइल्ड केयर, पर्सनल कमिटमेंट्स की होम मेकिंग। तो हो सकता है कि सवाल आएगा व्हाट इज द मेन रीजन फॉर फीमेल नॉट इंक्लूडेड इन द लेबर फोर्स? तो दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है चाइल्ड केयर, पर्सनल कमिटमेंट्स, दूसरा दिख रहेगा स्टडी, तीसरा दिख रहेगा मैरिज, फोर्थ दिख रहेगा ऑल ऑफ द। ध्यान रखना सबसे मेजर रीजन क्या है? चाइल्ड केयर,
और पर्सनल कमिटमेंट्स। जबकि मेल का सबसे बड़ा रीजन क्या है? वांटिंग टू कंटिन्यू स्टडीज। ठीक है, बढ़िया। पूरे दिन से खुशबू आ कहां से रही है? देखो तो कौन सुबह आपको ऊपर बता दिया गया है कि 62.8 52.2। तो आप देख लीजिए, याद रखना है क्या नहीं, बस चाइल्ड केयर और पर्सनल कमिटमेंट्स। जबकि मेल का सबसे बड़ा रीजन क्या है? वांटिंग टू कंटिन्यू स्टडीज। ठीक है, बढ़िया। अब दिखा रहा हूँ एक चीज आपसे मान लीजिए, ये क्या है आपका रिपोर्ट दिखा रहा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो का 15 इयर्स एंड अबव का रूरल, 15 इयर्स एंड अबव का अर्बन। 62.8 है टोटल। आपको ऊपर बता दिया गया है कि 62.8 52.2। तो आप देख लीजिए, याद रखना है क्या नहीं, बस एक बार देखिए 52.8 52.2 62.8। अच्छा ठीक है, और एक चीज क्या ध्यान देना, ये ध्यान देंगे कि अच्छा मतलब जो मेल का लिखे हैं बहुत ज्यादा है, फीमेल का कम है। इतना बस एक मोटा आइडिया आपको ऑब्वियसली बताइए, लेबर फोर्स में मेल ज्यादा है तो बस एक मोटा मोटी देखो, याद करके देखो। ठीक है, अब आ जाते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। हमको पता है अब उसको वर्कर पॉपुलेशन कौन लोग हो गए जिनको काम मिलेगा। लेबर फोर्स में कौन थे जिनको काम मिला या फिर जो काम खोज। 44.9% या 43.5%, 8% कितना था? 44.9%। ऑब्वियसली 44.9% काम खोज ले रहे या काम कर रहे थे, उनमें से 43.5% जो है एग्जाम में काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आओ तो देखोगे अर्बन और रूरल दोनों का सेम है। अगर ये सवाल पूछ रहे तो बोलोगे पक्का गलत होगा, कैसे सेम हो सकता है? बट ध्यान देना कि अर्बन और रूरल दोनों का मेल सेम है और फीमेल के रूरल का देखिए कारण क्या है, ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। फिर आगे इसमें बांटोगे 43.5 और एजेस का, पर यहाँ पर 3 एजेस में देता है, एक 15 प्लस एक 15 से 29। तो याद रखना जो 15 प्लस है उसका कितना होगा 57.4% और जो 15 से 29 है वो 41.4% है। याद रखना एग्जैक्टली 57 समथिंग 41 समथिंग इस टाइप से डिफरेंस आएगा। ठीक है, फिर आपको सेम इसका एक चार्ट मिल जाएगा यहाँ पर, देख लेना अगर मन करे तो। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% रखना है या बिल्कुल डाल करना है, एकदम इसको कंसिडर करो 3.1%। अब इसमें तो ये भी देखना है कि मेल में देखोगे अर्बन में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, फीमेल में देखोगे तो अर्बन 4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर ऑल एजेस दैट इज 3.1% है, जिसमें कि मेल का जो है ग्रामीण में वो है 2.6%, लेकिन अर्बन में है 4.2%, 3.6% है रूरल में, दैट इज 3.6% है रूरल में। एंड नहीं, ऐसे ओवरऑल 3.1 है और रूरल में 2.6 है और अर्बन में 4.2% है, और फीमेल में रूरल में 2.1% है और इसमें तो और ज़्यादा है 6.4%। एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अर्बन में क्या है, या तो वो नौकरी कर रहा है तो नहीं कर रहा है। रूरल में क्या है, या तो नौकरी कर रहा है या वो खराब नौकरी कर रहा है, तो नौकरी करेगा, खेती तो करेगा, किसानी तो करेगा। इसलिए याद रखना द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ फीमेल और मेल इन रूरल इज लेस देन कम है रूरल में शहर से। ठीक है, बढ़िया। दूसरा क्या रखना है आपको 15 ईयर से अबव का, 15 ईयर से अबव अगर आप देखिएगा तो आपका कितना बनता है 3.1%, मतलब एग्जैक्ट सेम। और 15 प्लस देखो इसमें दो चीजें अलग तरीके से दिया गया है। एक दिया गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर पर्सन्स 15 साल से अधिक, बढ़िया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर शिक्षित पर्सन्स 15 प्लस, तो शिक्षित लोगों का 6.5% है। अब आपको लगेगा कि शिक्षित लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, सिंपल बात है, क्योंकि वो बेटर जॉब हो रहे हैं इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, क्योंकि वो दे आर नॉट विलिंग टू सेटल और कॉम्प्रोमाइज, तो इसलिए बहुत ज्यादा है। और आपका जो मतलब सारे मतलब 3.1% हो रहा है। ठीक है, फिर यूथ का देखोगे तो यूथ का आपका कितना 9.9% है। यूथ का कितना 9.9%। तो आपको ये सब याद रखना है कि हाँ बिल्कुल रखना है क्या क्या डेटा में देखें। अगर देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट से बस तो हम ये देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओवरऑल 3.1 कितना था 3.1%, बहुत बढ़िया। फिर हम आगे 15 प्लस का, तो 15 प्लस में था पढ़ा 3.1 अनपढ़, तो पढ़े लिखे लोग ज्यादा परेशान थे। कितने परेशान थे 6.5% लोग परेशान थे, अनपढ़ केवल 1.1, बढ़िया खत्म हो गया। दूसरा फिर देखोगे अपने यहाँ पर यूथ का देखिए मतलब 15 से 29, अब 15 से 29 कितना परसेंट, 9.9%। बस याद रखो कहाँ जाना है, एक तो ढंग से देखोगे सब याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार इनको देख लेना बस कहना क्या चाह रहा है। अब आओ अलग अलग कुछ चीजें उनको आपको समझा दें। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये ट्रेंड्स, ठीक है, डेटा आपका यही करना, इससे ज्यादा डेटा नहीं है। अब इसके बाद ट्रेंड्स क्या आपको समझना पड़ेगा। देखो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स बाय स्टेटस इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मतलब कौन लोग क्या काम कर रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड है मतलब किसानी कर रहा है, रेगुलर वेज है बैंक में जाके काम कर रहा है, कैजुअल लेबर है जो कि आप देखते हैं कैजुअल लेबर रेजा पुलिस वो सब काम। ठीक है, तो अब इसका आपको आगे का काम क्या है कि 2025 वाले को एक बार बस देखेंगे पॉज करके और फिर हम आपको कुछ एनालिसिस बताएंगे, उन एनालिसिस पे जरा फोकस करना। सबसे पहला चीज एक बात देखो, मेल फीमेल और पर्सन टोटल वाले से फोकस करना। 22.4% था आपका रेगुलर वेज जो कि 23.6% हो गया। तो अगर सवाल आता है कि औपचारिक रोजगार की ओर बढ़ावा हो रहा है, अगर सवाल आता है कि देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, एम आई रॉन्ग? नो आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज़ द डेटा ऑफ PCS एनुअल रिपोर्ट इटसेल्फ स्टेट्स दैट 22.4% से बढ़कर 23.6% हो गया। रेगुलर वेज देखोगे 2024 में 22.4 था जो कि 23.6 हो गया। हम आपको ये याद करने के लिए नहीं करें तो 22.2 याद करो, 23.6 याद करो, बस दिमाग में ये फिट करो यार लास्ट एक साल में हम देखेंगे तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की तरफ, औपचारिक रोजगार की तरफ जो हमारा शिफ्ट है वो बढ़ा है। याद रहेगा
दूसरा चीज क्या हम आपको ये बता सकते हैं कि जो भी साल हो 2024 हो 2025 हो, महिलाएं हो पुरुष हो, सेल्फ एम्प्लॉयड इज मैक्सिमम। क्या हम बोल सकते हैं ये बात कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सबसे अधिक स्वरोजगार अभी रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। हालांकि ये दिख रहा है आपको कि इसकी हिस्सेदारी 57.5 से 56.2 हुई है, मतलब इसकी हिस्सेदारी बढ़ी है। हिस्सेदारी क्यों बढ़ी है? क्योंकि आपको बगल में ये दिख रहा था भाई कि रेगुलर दिन वाले बढ़ गए हैं, तो ये घटेगा ऑब्वियसली, तो ये घटा है। क्या ये केवल महिलाओं या पुरुष के लिए घटा है? नहीं, महिला हो पुरुष हो कुल हो सबके लिए घटा है। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या याद करने करें, जो स्वरोजगार है मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो मैक्सिमम है अभी बट डिक्रीज्ड। ठीक है, याद रहेगा। तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो फीमेल वर्कर्स हैं, जब हम स्वरोजगार की बात करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो देखोगे तो फीमेल का अधिक है। क्यों फीमेल का अधिक होगा? हम अपने घर का बात बताएं आपको, तो हम देखते हैं कि अगर पापा जॉब पे चले जा रहे हैं तो घर में जो गाय था मम्मी गाय को चारा दे रही है, खेत में पानी चला करके आ जा रही है, तो इसी को तो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आप देखिए आगे और बेटा आपको देखने को मिलेगा। हम आपको नहीं कह रहे, हम आपको ये सब रखने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम बस आपको ये कह रहे हैं कि ये महसूस करो। क्या महसूस करो? कि सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी की जब बात करते हैं ना तो महिलाएं अधिक है फीमेल से। ठीक है, बस इतना याद कर लो। अब हम हवा में नहीं बोलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है पहला शिफ्ट टुवर्ड्स फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है इंक्रीजिंग से। किसके लिए? दोनों। यहाँ पर लिखा नहीं है पर हम लोग देख सकते हैं। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बहुत बढ़िया देख चुके हैं हम लोग, मगर इसका शेयर दिव्यांग में बहुत से देखा है। तीसरा चीज क्या है? कैजुअल लेवल जो है आपका वो लगभग आपका स्टेबल रहा है, हमको दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। फीमेल वर्कर्स कंटिन्यू तो है वह हायर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, देख चुके हैं हम लोग। इसके बारे इसके पीछे कारण है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और क्या है? मेल वर्कर्स कंटिन्यू टू डोमिनेट द रेगुलर बेस सैलरी एम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी बात है कि नियमित वेतन में आप देखिए तो महिलाओं की जो है भागीदारी वो कम है। नियमित 26% मेल है, 18% फीमेल। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है भले ही दोनों का बना है बट स्टिल दिस गैप इज कॉल्ड जेंडर गैप। अब आपको बताना है कि जेंडर गैप का रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, रैंकिंग क्या है और इसके कितने पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक और डेटा दिख रहा है। ये सब आप एनुअल जो उठाए हैं भाई आप खुद देख लेना। जितने वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे BLSS का वो इतना सब ढंग से कोई बता नहीं रहा होगा, नहीं बताया क्योंकि ये सब चैट जीपीटी से नहीं मिलेगा। ये सब के लिए रिपोर्ट खोलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, जो कि सबके बस की बात नहीं है। अब एक और डेटा क्या है भाई? डेटा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स बाय इंडस्ट्री ऑफ सब छोटे जो सब 2025 है आपको दिख रहा है एग्रीकल्चर पहले 44.8% होते, अब 43% होते। तो पहला क्या बताया हमने कि एग्रीकल्चर आज भी सबसे बड़ा शेयर रखता है, कृषि अवधि रोजगार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखती है। हालांकि इसमें कोई कमी नहीं है। हम आपको कहने का सवाल है कि सबसे अधिक जो है एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर का शेयर घटा है, चौथा नहीं, आपको साफ साफ दिख रहा है एग्रीकल्चर का शेयर बिल्कुल घटा 44.8 से 43 है। जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भी घटा, वो तो याद नहीं रखना है बट ये याद दूसरा क्या करना है, जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भी घटा, साफ साफ दिख रहा है कि एग्रीकल्चर का शेयर बिल्कुल घटा है 44.8 से 43 याद नहीं रखना है बट ये याद रखना। दूसरा क्या करना है, जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भी घटा, तो द शेयर ऑफ इकोनॉमिक इन द फर्स्ट हैज इंक्रीज्ड। सबका या तो सेम है या तो बढ़ा है, या तो बढ़ा है या तो सेम है, या तो बढ़ा है या तो बढ़ा है, या तो बढ़ा है या तो सेम। तो बस दो चीज याद रखना, सबसे अधिक किसका है? एग्रीकल्चर का है। दूसरा सबसे अधिक किसका है? तो आपको यहाँ पर दिख रहा है 13.1 अदर सर्विसेज। दूसरा अदर सर्विसेज, उसके बाद आपको ट्रेड होगा, रेस्टोरेंट दिख जाएगा। और दूसरा बात कि बाकी सबका बढ़ा है या सेम रहा है सिवाय एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको याद रखना है अर्निंग ऑफ फीमेल लेबरर्स। फिर सब कह रहे हैं, याद रखने के लिए आपको नहीं दे रहे हैं, बस समझने की कोशिश करो कि जो फीमेल वर्कर्स हैं उनकी अर्निंग्स का बात है। अर्निंग्स दोनों की बढ़ी, इसको मत पढ़ो, नहीं पढ़ाओ सामने से। अर्निंग्स जो है भाई वो मेल का भी बढ़ा है फीमेल का भी बढ़ा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेल का जो बढ़ा है वो 5.8% बढ़ा है, जबकि फीमेल का जो बढ़ा है वो 7.2% बढ़ा है। ठीक है, मेल का भी वेतनमान बढ़ा है, फीमेल का भी वेतनमान बढ़ा है, पर इनके बीच में फर्क है। दूसरा आपको क्या रखना है, एवरेज ईयर्स इन फॉर्मल एजुकेशन, कि कितने साल तक फॉर्मली वो पढ़ाई है। अच्छा, अब अभी जैसे मान लो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, पर ऑब्वियसली आपको पढ़ाने के लिए पढ़ाएंगे, तो इसको बोलेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि वो डिग्री नहीं है आपको BLSS की, तो मोस्टली कोई डिग्री दे दिया। तो एवरेज एज कितना है भाई? दो तीन चीज बस याद रखो। टोटल अगर देखोगे ना कि फॉर्मल एजुकेशन 15 साल से अधिक बच्चों का 10 साल है। DSC 5.8% और फीमेल का 7.2%, 5.8% और 7.2%, 5.8% और 7.2%। बात करोगे तो 9.9 ईयर्स है। जब किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं 15 प्लस, और वहीं अगर आप 25 प्लस की बात करते हैं तो 25 प्लस में आपका 9.8 एवरेज। ठीक है, साथ साथ यहीं पर आपको दिख रहा होगा, देख लो भाई, फॉर पर्सन एज 15 ईयर्स अबव आपका 10 साल है, जिसमें कि 10.2 आपके मेल का है और 9.9 आपके फीमेल का है। ठीक है, और आपको इसमें याद क्या रखना है? बस ये 10, 10.2, 9.9 याद कर लो, पर ये याद रखना कि यही सेम ट्रेंड 25 साल वालों के लिए। इसमें ट्रेंड क्या है? ट्रेंड सिंपल ये है कि मेल का अधिक है, फीमेल का कम है, अर्बन मेल का अधिक है, अर्बन फीमेल का अधिक है, अर्बन रूरल मेल और रूरल फीमेल का कम है। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है भाई, अर्बन में लोग ज़्यादा पढ़ेंगे कि रूरल में, ऑब्वियसली अर्बन में अधिक पढ़ेंगे। तो बस ये ट्रेंड आपको याद रखना कि ये ट्रेंड हर जगह पर फॉलो करता है आपके। 25 साल वाले में फॉलो करेगा, इधर भी फॉलो करेगा। ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग क्या किया? अच्छा, ये नीट है, नीट के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। नीट क्या है भाई? जो कि कोई काम नहीं कर रहा है। कितने परसेंटेज में? 24.9% है, जो कि 15 से 59 के ग्रुप में आते हैं, और 15 से 24 जो कि आपका एकदम करीब एज है टू डेवलप, वो 21% है। तो ये एक्चुअल अलार्मिंग है कि 1 आउट ऑफ 5 पर्सन्स इन द मोस्ट इलाइट कैटेगरी या फिर इंटेलिजेंट ब्रेन वाला कैटेगरी है, वो आपका नाइदर एम्प्लॉयड है नॉर ही पढ़ाई नहीं कर रहा है, ना ही वो ट्रेनिंग कर रहा है। ठीक, देखिए आप लोग अब आ जाओ क्वार्टरली बुलेटिन। देखो हम लोग आपका क्या किए, आपका एनुअल बुलेटिन अच्छे से पढ़िए, अब क्वार्टरली बुलेटिन। अब क्वार्टरली एग्जाम में आया है क्वार्टरली, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि पूरा क्वार्टरली निकाल दें, सब आपको लाकर डेटा बढ़ा दें।
एक मिनट है उसके बाद कभी आया ऑब्वियसली अभी अप्रैल में अब जुलाई में हम करने क्या वाले ये तीनों रिपोर्ट से पहले पेज का बोलो डायरेक्ट हम करने क्या वाले इसमें आपको जो लास्ट क्वार्टर है ना जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर 4 उस क्वार्टर की बात करेंगे क्योंकि उस क्वार्टर में सारे क्वार्टर का डेटा दिया है ठीक है अब आपको ये सब देख करके बिल्कुल नहीं करना हम जो बोल रहे हैं बस उस पे सुनो बस आप रिपोर्ट उस पे फोकस करते रहो ठीक है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो अलग अलग क्वार्टर अलग अलग दिया है हम आपको कह रहे हैं 15 छोड़ दो 15 डबल छोड़ दो रूरल छोड़ दो अर्बन छोड़ दो केवल ऑल इंडिया पे फोकस करो ऑल इंडिया ऑल एजेस में कितना है 57 है मेल का लगभग 25 से 26 है फीमेल का तो बस इतना याद रख लेना कि 57 के लगभग आपका मेल का है और 25 से 26 आपका फीमेल का है और ओवरऑल 41 57 25 ओवरऑल 41 बस इतना क्योंकि वो करेगा क्या ना वो इससे चीज देगा 77 डाल देगा 61 डाल देगा 57 डाल देगा ये नहीं कि वो 57 पॉइंट खरीद के लेगा वो गेम ऐसे खेलेगा तो हम बस ये प्रिपेयर नहीं कि हमको एक इसका आइडिया है बस इस वाले जो रेंज का आइडिया है 77 है अच्छा ठीक है 57 अच्छा ठीक है हम आपके सामने लेते क्या याद करते हम बस ये याद कर लेते कि अगर आपको मेल का बात कर रहा है क्या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो अगर मेल की बात कर रहा है ऑल एजेस का तो मेल का आपका 57 के लगभग है फीमेल का लगभग 25 से 26 के और ओवरऑल आपका 41 से 42 के बीच में आता है ठीक है बढ़िया वर्कर पॉपुलेशन रेशियो फिर वही बात है सिर्फ ऑल एजेस देख लेंगे करना तो लगभग 54 से 55 24 से 25 तो 39 से 40 बस इतना याद रख लो ठीक है एक रेंज ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रूरल मेल सब सेल्फ एम्प्लॉयड है कि रेगुलर वेज है कि कैजुअल लेबर है क्या स्थिति है इसकी ये देखने में आपको लग रहा होगा एकदम किचकिच टाइप का ठीक है तो इसको छोड़ दो हम बगल में यहाँ पर आकर के आपको लिख करके देते हैं इसका नेट क्रक्स क्या है इसमें आपको याद करना तो वो चीज़ है भाई हम लोग एक बात करेंगे मेल का एक बात करेंगे फीमेल का पहले मेल क्या हो गया अगर तो मेल में आ जाओ रूरल है फिर अर्बन है फीमेल में रूरल है फिर अर्बन है अब रूरल की देखो रूरल में सबसे अधिक लोग क्या है सेल्फ एम्प्लॉयड उसके बाद लोग क्या है कैजुअल लेबरर्स उसके बाद लोग क्या है एम्प्लॉयज सिंपल सी बात है भाई अगर कोई आदमी गांव में तो खेती करता होगा खेती करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अब उसका खेती खुद का खेत नहीं है तो उसका अगर उसका खुद का खेत नहीं है कि फीस लैंडलेस है तो क्या करेगा कैजुअल लेबर का काम करेगा और कुछ लोग जो होंगे सैलरीड होंगे तो इसमें कुछ याद रखने वाली चीज है नहीं आप अपना बेसिक सेंस भी लगाइएगा तो आपको यही पता चलेगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड होगा कैजुअल होगा सैलरीड होगा सबसे सेल्फ एम्प्लॉयड होगा उसके बाद कैजुअल लेबर होगा फिर आपका सैलरीड होगा ठीक है अर्बन की बात करोगे तो सबसे अधिक क्या है भाई अर्बन में आप लोग आकर के एमएनसी में काम कर रहे हैं दिल्ली बेंगलोर में तो सैलरीड है ऑब्वियसली तो सबसे अधिक आपको सैलरी दिखेगा उसके बाद आपको कौन दिखेंगे उसके बाद आपको सेल्फ एम्प्लॉयड दिखेंगे क्या अगर नौकरी नहीं कर रहे हैं टैक्सी चला रहा होगा तो सेल्फ एम्प्लॉयड रहेगा और तीसरा आपको क्या मिलेगा कैजुअल लेबर्स आपको वहाँ पर सबसे कम मिलेगा क्यों क्योंकि यहाँ का जो लेबर वहाँ जा रहा है ना सूरत में डायमंड फैक्ट्री में उसका भी वहाँ पे पीएफ कट जा रहा है ठीक है कोई कॉन्ट्रैक्टर के अंदर है अब यहाँ पर देखोगे तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा क्या हो जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा एंड सबसे पहले होगा सैलरी फिर सेल्फ एम्प्लॉयड और फिर कैजुअल रूरल में 57% सेल्फ एम्प्लॉयड है 25% कैजुअल लेबर्स है और 17% रेगुलर है मतलब रेगुलर लेबर है अब ये सब देख करके यहाँ पर परेशान होना अच्छा है बस यहाँ पर देखो कोई डेटा याद नहीं रखना है 70 11 16 नहीं याद रखना पॉसिबल ही नहीं याद रखना मेरे लिए क्या है दो लेबर याद करो कर लो ये वाले पार्ट करना है तो सिर्फ ये वाला पार्ट कर लो पर हमसे नहीं होगा ये वही सेल्फ एम्प्लॉयड कैजुअल लेबर्स सैलरीड अर्बन में सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड कैजुअल लेबर्स अब आ जाओ फीमेल की फीमेल और मेल इन दोनों का एग्जैक्ट सेम है क्या ग्रेट जो आपको यहाँ पर मेल में बताएं सेल्फ एम्प्लॉयड फिर कैजुअल लेबर फिर सैलरीड फिर अर्बन में सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड कैजुअल लेबर सेम चीज फीमेल में जाना है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं अब आ जाओ इंडस्ट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ये पूरा बात अब ये पूरा देख करके आपको लग रहा होगा कि किस टाइप का फील आ रहा होगा पर याद नहीं रखना आपने कोई डेटा ना हम याद रख सकते हैं उसे अच्छा एग्जाम में छोड़ देंगे पर हमको इसको समझना पड़ेगा ये डेटा क्या है तो आओ बस उस डेटा को समझने की कोशिश करें यहाँ पर क्या है डेटा कि अगर तुम मेल की बात कर रहे हैं अगर आप मेल की बात कर रहे हैं मेल में आता है रूरल मेल मेल में आता है अर्बन मेल अगर हम रूरल मेल की बात कर रहे हैं तो रूरल मेल सबसे अधिक कहाँ पर फंसा हुआ है एग्रीकल्चर में कोई बड़ी बात है क्या समझ में आपको भी आ रहा है ये बात फीमेल का देखोगे सेकेंड में देखोगे रूरल में किसमें सेकेंडरी एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ माइनिंग हो गया क्वेरिंग हो गया कंस्ट्रक्शन हो गया इंडस्ट्रीज में काम करना ये सब हो गया और तीसरा क्या है आपका सर्विसेज सेक्टर में सर्विस सेक्टर का मतलब क्या हुआ टर्शियरी इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं क्या आपको एग्रीकल्चर सेकेंडरी टर्शियरी यही होना भी चाहिए ना अर्बन में देखोगे अर्बन मेल का देखोगे तो आपको एक फर्क दिखेगा अर्बन मेल का देखोगे तो आपको एक फर्क दिखेगा क्या फर्क दिखेगा उससे पहले क्या करते हैं ना रूरल मेल देखिए ना तो पहले क्या करते हैं रूरल की कंप्लीट करते हैं ये हो गया आपका रूरल रूरल में आप मेल देखिए अब आप रूरल में फीमेल देखिए सबसे अधिक रूरल महिलाएं किसमें रहेंगी सिंपल सी बात है भाई फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आप पढ़े नहीं है 70% से अधिक तो महिलाएं उसमें मतलब एग्रीकल्चर में फंसी हुई तो पहला काम वही जो एग्रीकल्चर करेगी पर दूसरा और तीसरा में फर्क आ जाएगा दूसरा यहाँ पर टर्शियरी हो जाएगा सर्विसेज वाला क्यों क्योंकि कोई कॉल सेंटर में काम कर रही है महिलाएं जैसे क्योंकि मतलब इंडस्ट्री में जाकर के हथौड़ा मारना कंस्ट्रक्शन पे काम साइट पे काम करना ये सब काम महिलाओं से उतना हो नहीं पाएगा तो वो क्या करेंगे टर्शियरी में काम करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका सेकेंडरी हो जाएगा ठीक है तो ये आपका क्या है रूरल है अब तुम यहाँ पर देखते होगा अब तुम यहाँ पर अगर देखते हो तो देखो रूरल फीमेल सबसे अधिक लगभग 75%
एग्रीकल्चर में भी, फिर टर्सरी में और फिर सेकेंडरी में। लेकिन मेल ज़्यादा एग्रीकल्चर में, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में। के बाद 14% के लगभग सर्विसेज में और 11% लगभग आपका सेकेंडरी में। लेकिन ये सब देख करके माथा खराब होगा। उससे अच्छा है कि हम बता रहे हैं, हम आपका मेहनत आप हम करके आए तो रूरल में मेल सबसे अधिक एग्रीकल्चर, सेकेंडरी टर्सरी, फीमेल में नीचे से उल्टा हो जाए। अब आ जाओ अर्बन में। अर्बन में आपको भी पता है भाई कि अर्बन में जो गेम है वो रूरल से अलग रहेगा। कैसे आ जाए मेल की बात करेंगे तो सबसे अधिक क्या कर रहे हैं लोग, आपका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का काम क्या है? टर्सरी। तो बस याद रखना सबसे अधिक टर्सरी होगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। दूसरा क्या होगा? सेकेंडरी होगा। क्यों? क्योंकि कहीं टेक्सटाइल भी लगा हुआ होगा, कहीं पर सेमीकंडक्टर चिप बन रहा होगा, एक्स वाई, तो सेकेंडरी होगा। खबर खेती, अर्बन एरिया में खेती कहाँ कर रहा है? जमीन है आपके पास। खबर होगा एग्रीकल्चर, जो कि आपका इंडिया की 5% है। अब आप अर्बन फीमेल में आ जाओगे तो वहाँ भी सेम ही है भाई, सबसे अधिक तो होना ही है। जमीन है नहीं तो लास्ट में एग्रीकल्चर ही होना है, तो सेकेंडरी होना है। तो इसका मतलब अर्बन में मेल और फीमेल बात एक है और रूरल में मेल और फीमेल बात एक नहीं। जमीन है नहीं तो लास्ट में एग्रीकल्चर। तो टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर एग्रीकल्चर, उल्टा। में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी उल्टा, और इसमें टर्सरी होना है तो सेकेंडरी होना है। तो इसका मतलब अर्बन में मेल और फीमेल बात एक है और रूरल में मेल और फीमेल बात एक नहीं। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कौन से डेटा पे? अनएम्प्लॉयमेंट पे। फिर से सिर्फ ये देखो 5 के लगभग 5 के लगभग। अच्छा ठीक है ना, बस इतना देख लेते हैं। अब आप कुछ वैल्यू देख लेते हैं। पीएलएफएस कौन रिलीज करता है? मार्च क्या नीति आयोग। ठीक है। अब ये है आपका पीएलएफएस 2023 से 24 रिपोर्ट का सवाल है। ये 71st बीपीएससी प्रीलिम है। अब इस सवाल को पकड़ने की कोशिश करो समझना। थोड़ी देर में आते हैं। एक सवाल यहाँ पर वो देखो। एज पर द पीएलएफएस डेटा क्वार्टर 2 का फाइनेंशियल ईयर 2026। ठीक है। द लार्जेस्ट शेयर ऑफ रूरल वुमेन वर्कर्स, लार्जेस्ट शेयर ऑफ रूरल वुमेन वर्कर्स। हमको भाई बताया है कि रूरल वुमेन में कोई बड़ा फर्क नहीं आया, मतलब ये ट्रेंड सबका सेम है। ये ट्रेंड सबका सेम है। कह रहा है रूरल फीमेल, रूरल मेल में कितना है? सबसे अधिक सेल्फ एम्प्लॉय, उसके बाद कैजुअल, उसके बाद सैलरी। मैंने पिछले कुछ सेल्फ एम्प्लॉय हो गया। समझ में आ रहा है? बन रहा है सवाल। हर चीज रखने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सेम देखिए। अब एक ये सवाल देखो, अकॉर्डिंग टू द पीएलएफएस 2023-24 रिपोर्ट क्या है? देयर इज अ ग्रेटर इंक्रीज इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो ऑफ रूरल फीमेल कंपेयर्ड टू द अर्बन फीमेल। ऑब्वियसली रूरल फीमेल अधिक रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास सैंपल स्पेस अधिक है ना भाई। मतलब कि आप वो कुछ भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर भी कर सकती है, सिलाई कर सकती है, कढ़ाई कर सकती है, बुनाई भी कर सकती है। और ये एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे, केवल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो की बात कर रहे हैं। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी नहीं है। ऑब्वियसली ये सही होगा। अब इसके लिए आपको रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो आप अपना बेसिक सेंस से बता सकते हैं ना। दूसरा देखो क्या है? द शेयर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन एग्रीकल्चर हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 2017-18 आपको इतना पता है कि 2017-18 से 2023 में माइग्रेशन बढ़ा होगा। अगर माइग्रेशन बढ़ा होगा तो इसका मतलब क्या है? ये तो कम एग्रीकल्चर में फंसे होंगे ना, उनका काम खेती तो फिर भी महिलाएं करेंगी, तो महिलाओं का शेयर घटा है, यही बोलने में बोला है। तो दूसरा बात ये, और आपको ये कैसे करता है कि सिग्निफिकेंट कि एकदम घटा ही घटा है, भयंकर घटा है। ऐसा कैसे हो? ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया आपके सामने? अगर कुछ हुआ है तो माइग्रेशन हुआ है, डिस्प्लेस माइग्रेशन हुआ है। डिस्प्लेस माइग्रेशन में लोग अपनी फैमिली को भी साथ नहीं ले जाते, बस जा करके वहां पर अपना काम करते हैं। तो अगर महिलाएं बच गई गाँव में तो वही खेती करेंगे ना। इसका मतलब क्या है? 26 स्टेट में 90% लोगों का, 90% स्टेट्स का वर्कफोर्स पॉपुलेशन रेशियो जो है वो नेशनल एवरेज से कम है। कैसे हो सकता है? 90% का कैसे हो सकता है? समझ में आया? ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखिए समझ आ रहा है? अब ऐसा चीज पढ़ेंगे तो एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट है भाई। इस वीडियो में हम लोग इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को अच्छे से कवर करने वाले हैं। अगर आप देखें तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आप इससे 2 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, बस एक बार गौर से सुनते रहो। इस वीडियो के एग्जाम पर डाल दिया गया, वहां से एक बार देख लेना है। स्टार्ट करते हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 कौन सा मंत्रालय निकालता है? सबसे पहला सवाल आपका ये आ सकता है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अच्छा, ये मंत्रालय की गाइडेंस में आता होगा। कौन सा इंस्टीट्यूट करता है इसको? तो याद रखना फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI। ठीक है, ये आपका अब तक 18वां 18th रिपोर्ट है, जो कि आपके अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और ये आपको यहाँ पर दिख रहा है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट। तो यहीं पर एक बार देख लेते हैं ये फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ। तो फॉरेस्ट का 3 क्लासिफिकेशन है, मतलब 3 इसका क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्या है कि इसका जो कैनोपी डेंसिटी है, इसका कैनोपी डेंसिटी शुड बी ग्रेटर देन 10%, सबसे पहला। दूसरा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि ये आपका 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर होना चाहिए। ये जो प्लांटेशन है वो 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर होना चाहिए। और तीसरा है कि जो ट्रीज है, इन ट्रीज का हाइट 2 मीटर से अधिक होना चाहिए। तो अगर ये 3 क्राइटेरिया फॉलो होता है तो आप उसको फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन में डाल सकते हैं। ठीक है, और जो चीजें रिकॉर्ड होगी, जो गवर्नमेंट मतलब अपने सोर्सेज रिकॉर्ड करेगी, उसको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। ठीक है भैया, अब यहाँ पर देखिए 3 क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन है ओपन फॉरेस्ट, एक है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, एक है वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो एक बात बताते हैं, आपको ऊपर क्या बताएगा कि 10% से अधिक कैनोपी डेंसिटी होना चाहिए। कैनोपी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? आपको ऊपर आसमान से फोटो खींचे तो मान लीजिए आपका फोटो, इसमें आपको कितना परसेंटेज हरा दिख रहा है, उसको डिवाइडेड बाय टोटल, वो कर देंगे तो आपका कैनोपी डेंसिटी आ रहा है। ठीक है, ओपन फॉरेस्ट से नीचे क्या होगा? ट्रीज। तो लेस देन 10%
33% of the country totally. दस परसेंट से ज़्यादा फॉरेस्ट, उससे कम ट्री. 715,343, 715,343. That's about it. One 56, 1289. Or 12044, 12044. 21.76% और 3.41%. That is the forest cover कितना है 21.76% और tree cover कितना है 3.41. 3.41. Forest cover कितना है फॉरेस्ट कवर कितना है 21.76% और फॉरेस्ट ट्री कवर है 3.41. सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है, फिर मिजोरम में, फिर अंडमान और फिर अरुणाचल में. सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप, फिर अंडमान, फिर मिजोरम, फिर नहीं सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर अंडमान और फिर अरुणाचल प्रदेश. किसान हैं.
प्रकारे आपण विचारू शकतो. गावात अमृतचा असं तुम्ही विचारलं. बारह से 0.5 19 Hello everyone.